Now you can see the assembly of L110 in its respective facility, and it will be moved. Roger. And these are the visuals from SVAB, where the L110 stage is being tilted and assembled between the booster stages. अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तृतीय तथा अंतिम चरण है LVM3 का, जिसे हम क्रायो अपर स्टेज के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजन होता है, कॉम्प्लेक्स इंजन जो कि क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है। यह अभी आप देख रहे हैं EB, जिसे इक्विपमेंट बे कहा जाता है। यह एक तरीके से दिमाग है पूरे लॉन्च व्हीकल का, और यह दृश्य है 36 वन वेब के उपग्रहों का, जिसे ऊष्मा कवच के अंदर परिरक्षित कर दिया गया है। इसे हम एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं, और इसे बड़ी सावधानी पूर्वक व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जाएगा। अब तक एकीकृत यान, जिसमें S200, L110 और क्रायो स्टेज एकीकृत कर दिए गए हैं, उसके ऊपर में उपग्रहों को समायोजित कर इसे लॉन्च पैड लाया जा रहा है। विहंगम दृश्य शार का, इसे बड़ी सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड लाया गया, और आगे की पूरे परीक्षण तथा तरल नोदक का भराव यहां से किया जाएगा। On your screens now, the magnificent sight of the LVM3-M3 OneWeb India mission standing at the second launch pad umbilical tower. The launch of LVM3 OneWeb India 2 mission is scheduled to take place today, the 26th of March 2023 at 9 hours 20 seconds Indian Standard Time from the second launch pad. This launch is the second commercial mission of LVM3. Earlier, on 23rd of October 2022, LVM3-M2 had carried 36 satellites of OneWeb. Today's mission intends to place 36 more satellites of OneWeb in 450 kilometers circular orbit with an inclination of 87.4 degrees. The launch is collaborated through New Space India Limited, a public sector establishment under Department of Space. The countdown for the mission is 24 hours long, and the activities are taking place unhindered. Roger. प्रमोशन के लिए वातावरण पूरी तरह सामान्य है, मौसम खुला हुआ है। दर्शकों के लिए भी जो यहाँ आए हुए हैं उन्हें आंखों देखा अनुभव होगा, बहुत ही रोमांचक अनुभव होने वाला है। यह दर्शक दीर्घा यहाँ उपस्थित आंखों देखा अनुभव लेने के लिए, बहुत भारी संख्या में यहाँ दर्शक आए हुए हैं। अपने आप में एक बहुत ही रोमांचक पल होता है एक इसरो के सबसे भारी लॉन्च व्हीकल के लिफ्ट ऑफ को देखना। These are the visuals from the launch view gallery here at Sriharikota. More than 10,000 enthusiastic audience have joined to watch the launch live. Roger. लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं। इस प्रमोशन की उल्टी गिनती 24 घंटे पहले प्रारंभ हो चुकी है, और सारी गतिविधियां पूर्व निर्धारित रूप से तथा सुनियोजित तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। अब हम प्रमोशन से 22 मिनट 19 सेकंड की दूरी पर हैं। इस दौरान यान तथा उपग्रहों को पावर ऑन कर उनकी स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जा रही है। तरल नोदक का भराव कर तथा स्थिति प्राप्त कर भराव शुरू किया जा चुका है। अंतिम आवेशन के पश्चात यान पूर्णतः तैयार होगा अपने मिशन को पूरा करने के लिए। सभी वैज्ञानिक
तंत्र विशेषज्ञ अभियंता अपने तंत्रों के स्वास्थ्य जांच कर और संतुष्ट होने पर तंत्रों की सूचना अपने तंत्र निदेशक को देंगे। Roger. Several teams of ISRO belonging to the range launch vehicle Noted. इसमें और Minus 21 काउंटडाउन के minutes. समय Request कई all प्रमुख stations तंत्रों के change स्वास्थ्य over to जांच हो channel रही 2. है। इसमें बैटरी का आवेशन, ट्रैकिंग स्टेशन से संचार जांच, मिशन कंप्यूटर, वास्तविक समय तंत्र, एकॉस्टिक सप्रेशन सिस्टम, जायरो पैकेजेस आदि की जांच संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। कुछ अंतिम जांच के पश्चात ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाएगा। All real-time systems are ready for the launch of LVM3-M3 OneWeb India 2 mission. ROD Roger. RSO to ROD. Range safety systems are ready for the launch of LVM3-M3 OneWeb India 2 mission. ROD Roger. CNC to TTC Director, all STEC network stations confirm readiness to support real-time launch of LVM3 OneWeb India 2 mission. TTC Director Roger. You can start storage. Minus 20 minutes. Request all stations change over to channel 2. has started data storage. Even number 453, 454, 461, 466 completed. The launch vehicle is ready with all its systems being in the final level of readiness. All the propellants have been serviced. Batteries have been charged. Please change over to channel 2. This is Vehicle Director. Based on the vehicle system performance, vehicle is ready for the launch of LVM3-M3 OneWeb India 2 mission. Mission Director Roger. Satellite Director calling Mission Director. All satellite systems are ready for launch. Mission Director Roger. ROD to Mission Director. Range is ready for LVM3-M3 OneWeb India 2 launch. Minus 19 minutes. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of all participating TTC stations and network for supporting LVM3-M3 OneWeb India 2 mission. Mission Director Roger. Mission Director hereby authorized the launch of LVM3 M3 OneWeb India 2 mission based on the clearances of MRR and Launch Authorization Board, based on the confirmation of readiness of vehicle systems, spacecraft, range and TTC network systems by respective mission executives and prevailing favorable weather conditions. Mission Director hereby authorized for the launch operation sequence of LVM3 M3 OneWeb India 2 mission for the launch today, that is 26th March 2023 at 9 hours 20 seconds Indian Standard Time. All stations to note, Mission Director has given authorization for launch. The Launch Authorization Board had reviewed the readiness of all the technical systems and amenability of whether to give the go-ahead for the commencement of countdown. You have just watched on your TV screens Pre-launch operations on C25 stage. Shri S. Mohana Kumar, Mission Director LVM3-M3, giving clearance for the initiation of launch automatic launch sequence, based on which the initiation has been commenced. अभी अभी आपने देखा कि इस ट्रैक निदेशक, उपग्रह निदेशक, यान निदेशक तथा रेंज निदेशक, टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग एंड कमांड निदेशक ने अपने तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जानकारी मिशन निदेशक को दे दी है और इसके बाद मिशन निदेशक ने लॉन्च की अनुमति प्रदान की। तत्पश्चात यान निदेशक ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है। इसके बाद यान स्वचालित हो जाता है
और पूरा नियंत्रण ऑन बोर्ड कंप्यूटर के पास चला जाता है। Timed concert of critical activities have been carried out in the past 24 hours of countdown. 14.5 minutes ahead of the launch, automatic launch sequence is initiated, on it, SHAR 1 and 2 station. which is a capsule of the most essential confirmations regarding the launch vehicle and the spacecraft systems. All stations to note hydrogen tank PLO started and the boil off commenced. Minus 16 minutes. This is vehicle director. Vehicle director authorizes the ALSC to proceed with the automatic launch sequence for the launch of LVM3-M3 OneWeb India 2 mission. LSC Roger. SDS servers activated. MC confirmed reception of SHAR 1 and SHAR 2 data. अब ऑन बोर्ड कंप्यूटर ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है। इस दौरान वह आंतरिक जांच कर खुद ही स्वास्थ्य जांच करेगा प्रमोचन यान की तथा सब कुछ संतोषजनक होने पर प्रज्वलन का कमांड देगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर पूरी व्यवस्था बनाई गई है विजिटर्स गैलरी के लिए, जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद यहां दर्शक आकर आंखों देखा अनुभव ले सकते हैं। अब हम प्रमोचन से 14 मिनट 47 सेकंड की दूरी पर हैं। 70 bar 5 bar 2 cryom linkages given. We are 14 minutes away from the launch. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है वन वेब द्वारा निर्मित 36 उपग्रहों को 450 किलोमीटर की निम्न भू वृत्ताकार कक्षा में 87.4 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित करना। अब तक वन वेब के कुल 588 उपग्रह उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं। इस मिशन के पश्चात अंतिम 36 उपग्रहों के साथ वन वेब के उपग्रहों का प्रथम पीढ़ी के नक्षत्र पूर्णतः सक्षम होंगे पृथ्वी के दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए। अब दर्शकों के लिए प्रस्तुत है एक कर्टेन रेजर वीडियो। LVM3-M3 is ISRO's heaviest launcher, standing high at the SDSC SHAR. It is all set to launch the second batch of 36 commercial satellites of OneWeb. The first batch of 36 satellites was launched in October 2022 by LVM3-M2 launch vehicle. The OneWeb Gen 1 is a 150 kilogram satellite, and the constellation comprises of 648 individual satellites, 588 active satellites equally divided among 12 planes, operate at an altitude of about 1,200 kilometers. Minus 12 minutes. The vehicle will place the satellites in a low Earth orbit. With this launch, OneWeb will complete the first generation of OneWeb constellation and shall initiate the global coverage in 2023.
It will bring high-speed, low-latency secured solutions to enterprises, along with towns, villages, municipalities and schools, including the hardest-to-reach areas across the country. OneWeb has collaborated with New Space India Limited, NSIL, the commercial arm of Indian Space Research Organization, for this launch. NSIL has arranged with OneWeb to launch 72 satellites in 2 phases. LVM3 has established itself as a reliable and robust launch vehicle of ISRO. This is for the second time that LVM3 will launch multiple satellites into low Earth orbit. It has the heaviest payload mass till date. With this launch, the LVM3 shall substantiate its position in the international commercial launch services market and reach newer heights. We are about 10.5 minutes away from the launch, and as we await the launch of LVM3-M3 OneWeb India 2 mission, let me briefly explain the mission's flight events. The gigantic twin S200 strap-on boosters will simultaneously fire at T0 or the exact time of liftoff, providing the thrust for liftoff, and they continue till 138 seconds. The core L110 liquid stage, powered by hypergolic liquid propellant, ignites 111 seconds into the flight when the rocket is at an altitude of 43 kilometers and having acquired a relative velocity of 1.2 kilometers per second. The S200 strap-on boosters are jettisoned 138 seconds into the flight. The next 2 flight events happen at quick succession when the rocket would have negotiated the dense atmosphere. They are the separation of payload fairing, as the aerodynamic shape of the rocket is no longer important, and the other event is the initiation of closed-loop guidance. The L110 core stage that would have provided thrust to negotiate the trajectory for close to 200 seconds completes its burn and separates at 308 seconds into the flight, while the rocket would have acquired 244 kilometers altitude. The cryogenic upper stage C25 is ignited 2 seconds later and burns for 632 seconds, adding 204 kilometers to the altitude